We have done the prediction of period of groups ना, ठीक है। थोड़ा सा बस आप लोग को ना एक बार रिवाइज करा दे हम। लेट्स डू एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। प्लीज राइट द क्वेश्चन विथ मी। Determine the period, block, and group number for following. ठीक है। फर्स्ट वन आप लिख लीजिए, आर्सेनिक 33, एंड दूसरा लिख लीजिए आप निकल 28। questions and send your answers on my WhatsApp. You are free to look at your notebook then. आप notebook देख सकते हैं। If you want any hint or you want to remember what we have done in the previous lecture, ठीक है। But try to do it correctly. First write the electronic configuration, then try to look at the period first of all. That will be given by the maximum value of principal quantum number. Then you will know about the block by looking at the where the last electron is going, in which subshell the last electron is going, and so on. ठीक है। होपफुली सही करेंगे आप लोग, कीजिए प्लीज। Let me know if you're getting stuck somewhere, okay?
although you are free to use your notes, you should not get stuck. You should be able to comprehend and understand whatever you have written in your notes. Zainab is just give me a second, Zainab. आर्सेनिक के लिए you have got the period. पीरियड नंबर आपने नहीं लिखा है जैनब. I missed it, sir. I'll write it. आप बता दीजिए कितना होगा, ऐसे ही बता दीजिए. 4. हाँ ठीक है, दोनों के लिए ना. Yes, sir. हाँ अच्छा ठीक है. एक और चीज ना, मतलब भाई होपफुली बहुत सारे टीचर्स ने आपको ये कहा होगा, इफ यू लुक एट द जो आपने लिखा ना डी ब्लॉक, उस आई मीन दैट डजंट रियली लुक लाइक डी, है ना. I will change it, sir. सिमिलरली इफ यू लुक एट द ब्लॉक ई ब्लॉक, वो ब्लॉक का बी भी देखिए जरा, है ना. It seems like B only. मतलब वो बस नहीं नहीं पी Sir, it's lagging. जो ब्लॉक Sir, you're lagging. हाँ गाइस आप लोग बताइए, am I audible now? अभी ठीक आ रही है आवाज. हाँ जैनब बताएं. No, sir. नहीं अभी भी ठीक नहीं है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट विल बी फाइन, हो जाएगा. इंटरनेट तो ठीक है, 20-22 एमबीपीएस आ रहा है मेरा स्पीड. ठीक है. गाइस टेल मी शाइमा सबिहा जैसे दिस बी इज नॉट रियली करेक्ट ना. ये जो बी लिखा है ना जैनब, देखिए जरा. इट शुड बी लाइक दिस शुड बी अ बिट लॉन्गर ना. फिर ये ना होता बी ब्लॉक. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा. इवन दो मेरी हैंडराइटिंग में ना ऐसी ही मतलब है, तो हम थोड़ा टीचिंग इसमें आ चुके हैं, देन आई हैव टू राइट इट अ बिट मोर प्रॉपर्ली, और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है. मेरी हैंडराइटिंग ऐसी देखने में अच्छी है, बट व्हेन द पीपल दे स्टार्ट रीडिंग इट दे आर लाइक ओ माय गॉड क्या ही लिखा, समझ नहीं आता. ठीक है, तो आई थिंक योर्स इज आल्सो सेम. फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, मेनी पीपल विल रीड दिस एज वर्क. लग सकता है ना लोगों को ये आपने वर्क लिखा है जैनब. व्हाट अबाउट व्हाट शाइमा आप बताइए, वर्क लग सकता है किसी को, Yes, sir. है ना.
ठीक है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा जैनब, है ना, ऐसा ना हो कि यू नो दी कंसेप्ट, यू हैव रिटन द आंसर्स करेक्टली, ओनली बिकॉज ऑफ सम हैंडराइटिंग मिस्टेक आपके मार्क्स कट जाए, ठीक है। चलिए, सो आई हैव गॉट आपके आंसर्स, आई थिंक दीज आर करेक्ट। डी ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर नहीं बता पाया आपने। देखिए, इफ इट इज इन द डी ब्लॉक, देन हाउ डू वी डिटरमाइन द ग्रुप नंबर? जसलीन एंड सबीहा, आपका आंसर नहीं आया है। जसलीन एंड सबीहा, जसलीन, जसलीन आप बताइए, व्हाट हैपेंड जसलीन? Yes, sir. आंसर क्यों, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू डिड नॉट आंसर? माय वॉइस इज लैगिंग। इट शुडंट लैग। दिक्कत हो रही है। अच्छा, गिव मी अ सेकंड गाइस, है ना, आई विल रीजॉइन, ओके, आई विल रीजॉइन। am I audible now? अभी ठीक है आवाज? टेल मी गाइस, यस और नो, क्या बोला आपने, समझ ही नहीं आया हमको। Yes, sir. ओके फाइन। हाँ हाँ, 8 into 2 नहीं हो, सेकेंड वन सही नहीं है। जसलीन, आपने नोट्स में ही शायद गलत दिया हो। सो वी हैव आर्सेनिक, इसके लिए जो, अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन इट आल्सो। हाउ विल वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सबसे पहले व्हाट इज द नोबल गैस? इट विल बी Argon. आर्गन, है ना, विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आर्गन इज विच नोबल गैस? आर्गन इज थर्ड नोबल गैस, राइट? तो विल स्टार्ट विथ 4s, करेक्ट है ना? तो you have 4s to, after 4s you have 3d, 3d में 10, है ना? तो we have 12 electrons already filled, यानी कि we have reached 30, 30 के बाद और 3, तो 4p3. So from here we will get the period, which will be fourth period, because the maximum value of principal quantum number is 4. The block, it will be p block, because
The p subshell is getting the last electron, and the group number, it will be equal to 10 plus valence electron, which will be equal to 10 plus valence shell is fourth shell. Fourth shell is having 2 electrons and 3 electrons. That is a total of 5 electrons. That is going to give you 10 plus 5, that is equal to 15 group. 13 लिखा है कुछ बच्चों ने शायद, है ना? Some people have wrote 13. Jasleen ने जैसे 13 लिखा है. Jasleen, you got it now? What's the mistake? Yes, sir. Zainab आपने क्या लिखा? Zainab आपने 13 नहीं होगा ना? Got it, Zainab? Yes, sir. ठीक है, ये हमेशा देखिए, ध्यान रखिएगा इसके बारे में. Then we have nickel 28. Nickel 28 will be again argon. Here we have already done 18 electrons, so remaining we have 10 electrons, which will be 4s2 and 3d3. The period in this case will be still the fourth period. The block in this case will be the D block, and the group number in this case will be the number of electron in ns and n minus 1d. 10 क्या है आपके पास? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, 4 minus 1 3d. 4s और 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड कर दीजिए. इट इज 2 plus 8. ठीक है जसलीन, आपने थोड़ा सा वहां पे गलती कर दिया. सो इट इज द 10th ग्रुप. जसलीन, यू गॉट दिस? यस और नो? Yes, sir. We are going to learn the trick to remember the periodic table. So we will be learning only the S block elements and the P block elements right now. और उसके बाद जो है, like in the 12th standard, you will be needing more of the D block elements. So right now, I will not focus on the D block elements too much. But if somebody wants the trick to remember the D block elements also, then just message me on WhatsApp. I will send you the small tricks. You can remember from. But it's very crucial to remember the S block elements and P block element at least. Okay? If you want to be good in chemistry, and it is easy. It's not that it's going to be hard. Just tell me one thing. All of you understand Hindi, or is there someone who does not understand Hindi? Me. Jasleen does not understand Hindi. Sabiha, Shaima, and Zainab, all of you understand Hindi? Shaima, okay, fine. आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? Zainab and Sabiha? हाँ ठीक है, बोलिएगा तब. माइक ऑन करके बोल दिया गया ना, तो चैट में आप लोग क्यों बात करने की जरूरत पड़ती है? ठीक. तो देखिए, इन द ग्रुप नंबर 1 आई एम राइटिंग सम ट्रिक्स. अभी इंग्लिश में हमको फिर से थोड़ा देखना पड़ेगा. आई डोंट रिमेम्बर द ट्रिक्स इन इंग्लिश. हिंदी में तो हमको याद है. ट्रिक टू रिमेम्बर पीरियोडिक टेबल. ठीक है, ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 1 में क्या है? हाइड्रोजन. ठीक है, तो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम. ठीक है, इतनी तक आपको याद रखना. सीजियम एंड फ्रांशियम. अब इनको याद कैसे रखेंगे? ए लीना, ई रब से फरियाद. ए लीना की रब से फरियाद. ए लीना की रब से फरियाद. This is one way to remember. The other way of remembering it is what? It is just you remember hydrogen and then you have Lina, Rab, Kas, Par. If you say it 10 times, it will be very easy to remember. I don't really like the second one, which is kind of a sentence. It makes sense, but the previous one, it does not make sense, but it is easy to remember. Lina, Rab, Kaspar, Lina, Rab, Kaspar, Lina, Rab, Kaspar, Lina, Rab, Kaspar, Lina, Rab, Kaspar. You repeat it 10 times, 20 times for a few days, and will be stuck in your head. Lina, Rab, Kaspar. Another thing it's very useful in Lina, Rab, Kaspar is you don't have to think. They may I have to take only H or HE. जैसे ये confusion हो सकता है. Not now. Now it will be saying, okay, fine. From here I have to take just hydrogen. Right? Lina ki. So that may be a confusion after a few months. Okay, but that confusion will not be there if you are remembering hydrogen. Lina Rab Kaspar. Lina Rab Kaspar means you don't have any confusion. Lina Rab Kaspar.
Similarly, so those who don't know Hindi, they can remember this way: Lena Krapkaswar. ठीक है, Zainab and Jasleen. Yes, sir. Lena Krapkaswar will work for you. Yes or no? It will work, na? Yes, sir. Okay. Group number two is, see, group number two, if after lithium, you will have beryllium, okay? In the group number two. Adjacent to helium, sorry, adjacent to hydrogen, you don't have anything. But it is not beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Barium and radium. Okay. So those who don't know Hindi, they can remember like this: Be Magda Sar Bara. Be Makka Sar Bada. Be Makka Sar Bada. Those who know Hindi, they can remember like this: Beta Mangeka Scooter. Beta Mange Car Scooter. बाप राज. ठीक है, और यू कैन रिमेम्बर इट एज बेमक्का सरबरा. बेमक्का सरबरा. नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 13. So group number 3 से लेके group number 12 तक we don't have to remember it right now. D block elements, we have to remember the D block elements more importantly. So group number 13. Group number 13 के लिए क्या है? We have boron, aluminium, helium, indium and thallium. तो अभी तो अभी हम ना हिंदी बता रहे हैं, ठीक है? It is बैगन आलू गाजर इन थैल. बैगन आलू गाजर इन थैल. बैगन आलू गाजर इन थैला. ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए आई हैव टू सी नाउ. फॉर इंग्लिश पीपल इट इज बैग इट, है ना? आप अगर याद कर सकते हैं बैग इट, BAG, बैग इट. मेक सेंस? हाँ या ना बताएं. इंग्लिश पीपल टेल मी. बैग इट. यू नीड टू रिमेंबर बट, है ना, कि बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, थोड़ा सा याद आ जाएगा. बैग इट. यू विल रिपीट इट लाइक दिस: बैग इट, सॉरी नॉट बैग इट. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैग इट. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैग इट. जसलीन एंड जैनब, क्या ख्याल है, बताएं. चलेगा? Yes, sir. ठीक है. देर आर अदर्स ऑल्सो, है ना. एक है बॉलर अली गेव इंस्टेंट टी. यू कैन आइदर रिमेंबर दिस वन ऑल्सो. इंग्लिश वाले हमको तो नहीं याद रहते, बिकॉज I saw this only when I became a teacher. I've never needed English mnemonics when I was studying, so I remember these Hindi ones only. Baller Ali gave instant tea. Baller Ali gave instant tea. Okay. Next is group number 14. Hindi ones are fun, by the way. English वाला पता नहीं, doesn't seem much fun. Group number 14 में कौन कौन है? हाँ, कार्बन. So we have Cassie और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. What is SN, guys? Tell me. SN क्या होता है? किसी को पता है? Tin. Yes. And what is PB? Lead. Yes, very good. Tin and lead. ठीक है. So for the Hindi people, it is like this: कैसी, कैसी. कार्बन वाला कैसी, है ना, सेसी नहीं, कैसी. गीत सुनाऊं, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु.
कैसी गीत सुनाओ प्रभु, कैसी गीत सुनाओ प्रभु, दैट इज फॉर that is for group number 14. For the English people, chemistry sir gets snack publicly. Chemistry sir gets snack publicly. ठीक है. Chemistry sir gets snacks publicly. Then we have group number 15. Group number 15 may we have nitrogen. We have nitrogen, phosphorus, we have arsenic. What is SB? SB क्या होता है guys? Tell me. SB नहीं पता. Antimony. Okay. SB is antimony. And then we have bismuth. Okay. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. For the Hindi people, it is Nana Patekar. You know, guys, Nana Patekar. किसी को पता है Nana Patekar कौन है? Aishwarya सब बीमार. हाँ guys. You guys know who is Nana Patekar? नहीं. No one of you know Nana Patekar. आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, ठीक है ना? Dean, Shaima, Sabiha, Jasleen, Zainab, all of you will ask your parents, okay? ठीक है? Yes, sir. नाना पाटेकर कौन है? ठीक है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार. That is for what the Hindi people. For English people, it's quite hard, right? No person can assassinate Sebastian Billy in Moscow. I think Sebastian Billy तक ठीक है. Moscovium को छोड़ देते हैं. We don't need Moscovium. No person can assassinate Sebastian Billy. Now, what you can do is, now you can make your own. For example, no person can assassinate. वहां तक तो आप सेम रखिए. SB और BI के लिए you can put your friend's name, है ना? You can put your friend's name instead of Sebastian Billy. कुछ और रख सकते हैं आप. क्या रख सकते हैं SB के लिए? सबीहा रख दीजिए, है ना? सबीहा रख दीजिए, ठीक है. दो नहीं हो जाएगा. सबीहा ऐसे करिए. सभी, हाँ सबिया बोलिए. मेरा नाम ऐसा नहीं होता सर, मेरा नाम कम रखते हैं. नहीं आपका नाम ठीक है. नो पर्सन कैन असैसिनेट सेबेस्टियन बिली, नॉट सबिहा. ठीक है. देन वी हैव ग्रुप नंबर 16. ग्रुप नंबर 16 में वी हैव ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम. नाउ फॉर इंग्लिश पीपल एंड हिंदी पीपल ये काफी आसान है. यू रिमेंबर इट लाइक दिस. उस से टेपो, उस से टेपो. I don't think you will need any English or Hindi things for this, right? है ना? उससे टेपो, उससे टेपो. ठीक है. Moving on. Group number 70. These are also known as halogens. और group number 17 में हमारे पास आते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन. नाउ ये तो काफी आसान है. This first class biryani in Australia. फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया. अब ऑस्ट्रेलिया की जगह आप कुछ और रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो. फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. ग्रुप नंबर 17. देन वी हैव ग्रुप 18. ग्रुप नंबर 18 वी हैव हीलियम. हीलियम कम्स जस्ट आफ्टर हाइड्रोजन, है ना? तो हीलियम, उसके बाद क्लोरीन के बगल में आएगा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. फॉर द हिंदी पीपल ये जैसे हमने बनाया अपने दोस्त के नाम पे, हे न्याज हरे करो जेरोक्स रंगीन. हे न्याज अरे करो जेरोक्स रंगीन. हे न्याज अरे करो जेरोक्स रंगीन.
ठीक है. For the Hindi, sorry, for the English people, you can remember it like this. He never arrived. Karen exited with Ron. पता नहीं आता है. देखिए, English people तो they only can understand. By the way, how much of the Hindi you can understand, guys? Like यहाँ पे जो भी हिंदी यूज हुआ है, जैसे बैगन, आलू, गाजर इन थैला, जसलीन एंड जैनब. Are you able to understand this part? बैगन, आलू, गाजर इन थैला. Not really, sir. Not really, ना. बट जो हिंदी वाले उनको तो दोनों समझ में आ रहा है. विच इज बेटर, गाइस? सभी हाँ बताइए. विच इज बेटर, इंग्लिश वाले ट्रिक या फिर हिंदी वाले ट्रिक्स? English. इंग्लिश वन इज बेटर. जैनब, विच इज बेटर, इंग्लिश और हिंदी? Half of them Hindi, the other one English. Oh, sorry, what, Zainab? Half of them in Hindi it was good, the other one in English. हिंदी इज मोर फन ना, मतलब ऐसा. इंग्लिश तो फीलिंग ही नहीं आती. इट्स ओनली बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट लाइक कुछ उसमें वो, मतलब इंग्लिश ही गलती है. इट्स नॉट माई मदर टंग, दैट इज लाइक फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया. बिरयानी की वजह से बस ये ठीक है, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया. But the Hindi one is even more fun. Hindi one, it's going to remind you of India, and it's going to remind you of for group number 17. It's going to remind you of mohalla, gali, the street in which you live in. ठीक है, जब भी ऐसे, if you, do you have any fight or any, like if there is any quarrel in the street, then who comes first out of their homes? कौन सबसे बाहर पहले, मतलब who wants that tea first of all? किसको पता करना है किसी लड़ाई हो रही है? Who comes first out of their homes? Tell me next. जैनब, शायमा, सबीहा, जसलीन. बाकी घरों से बाहर निकलते हैं ना लोग. They come outside ना to see what's happening. Who is the first member from a home? अरे, tell me. The dad. The dad. Quarrel in the sense like not like fight kind of thing कि जाके किसी को बचाना पड़े. Quarrel बस बदतमीजी हो रही है. तब कौन बाहर निकलता है? Usually the aunties ने. फिर कल बाहर आई आंटी. For the Hindi one it is फिर कल बाहर आई आंटी. ठीक है. Now another thing that I will suggest is that you also create a kind of visual, like you can visualize all of these tricks. First class biryani in Australia, you can think of yourself in Canberra. Canberra में है ना, और Sydney में है ना, that ओपेरा हाउस सिडनी में है ना, वो लोटस टेम्पल जैसा जो दिखता है, looks like lotus. Yeah. So you can imagine that and imagine biryani. Usse tepo in Hindi it means like copy from him. So you can think about an examination where somebody is copying. No person can assassinate Sebastian Billy. Or you can imagine someone, है ना? आप वो imagine कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा. There is one very famous. There's not one. There is one meme song, no? There was once ऐसे करके, क्या है वो meme song? So something like there was once a Russian guy. ऐसे करके नहीं है? No one, you know. Saying Rasputin. There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong. His eyes was flaming blue. तो नो पर्सन कैन असैसिनेट सेबेस्टियन बिली. आप उस सॉन्ग से भी रिलेट कर सकते हैं. ठीक है. गॉट इट गाइस. जैसे नो प्लीज. सुना है आप लोगों ने सॉन्ग? नहीं सुने? किसी नहीं सुना है? जसलीन, सबीहा, शायमा एंड जैनब. Nobody has heard this song. हाँ, जसलीन. सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही. सबीहा, सबीहा.
should I, ये कॉपीराइट लग जाता है ना, लेकिन you can play a few lines ना. Just give me a second. This one. Did you hear anything? No, sir. Yes. हाँ. I was saying about this song. ठीक है, वैसा याद कर सकते हैं. Chemistry sir gets snacks publicly. Baller Ali gave instant. So try to think of visualize each and everything. ठीक है ना? Then it will be easier for you guys to remember also. So this is something to remember. अब ये है कि we are going to use this. Okay, we are going to use this. So next you will write the concept of valence. Now you know the group number. ठीक है? Concept of valence. पहले concept of valence electron. ठीक है, right here. Concept of valence electron. क्या है concept of valence electron? It's very easy. The number of electron in the valence shell is called valence electron. So what is valence shell? Valence shell के साथ साथ आप एक और चीज लिखेंगे ना, last shell. ठीक है, last shell is the valence shell. The number of electron in the valence shell is called valence electron. अच्छा. Another thing is that how to determine the valence electron? Do we need to know the atomic number and do the all electronic configuration? Then only we will know. No. It's quite easy to determine the valence electron. Valence electron, it is equal to the unit digit of group number. ठीक है? Unit digit of group number. So if you know the elements group number, that is why we have memorized and I have written all the tricks in terms of group number 1, group number 2, then 13, 14, 15, 16, 17, 18. Right? Why? Because if you know the group, the whole group, okay, then you know the valence electron. Okay? So for example, calcium, so calcium is in second group. So वहाँ पे क्या हो जाएगा valence electron 2, the unit digit. If I look at phosphorus, phosphorus is it is a nana particle actually a subimar, that is group number 15. So group number 15 will have the valence electron 5. और सिन्मारी है हाँ या ना बताएं? Make sense yes or no? Jasleen, Sabiha, Shaima and Zainab. Yes, sir. ठीक है. So you will write a question. Determine the valence electron for following. Now, this valence electron, this is also very useful. ठीक है ना? ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं. You have to be very comfortable in these things. You should remember all the tricks. Group 1, Group 2, Group 13 से लेके 17, 18 तक. ठीक है? 13 to 17, 18. It's very important to remember all of those things. So they're going to be used in chemical bonding in like very extensively. Things will become very easy if you remember that periodic table. Things will become big, very easy, very easy. This I mean, if you will get questions that you will not be able to start if you don't know what the group number of that particular element is. Okay. I mean, you should know what the group number, and from the group number, you should know what is the valence electron. Then you will also learn about valency. वहां से भी पता चलेगा. ठीक है? So all of these things are very crucial, very crucial. ठीक है? So please pay attention in all of these things. These are the most important parts that you are going to learn in this particular chapter, which are going to be used in the next chapter, chemical bonding, which are going to be used in the chapter redox reactions, which are going to be used in the chapter coordination chemistry of the 12th standard, which are going to be used
in the chapter Organic Chemistry of 11th standard. ठीक है? And the 11th standard organic chemistry is the base for the 12th standard organic. So this is something where you have to focus. Okay? Whatever we are doing today's class, please redo it. Okay? Please redo it. If possible, rewatch the lecture. If possible, please rewatch the lecture. Do all the problems. Okay? Chali. I'm giving you some valence. You have to determine the valence electron. Suppose we have calcium. Okay. Second is fluorine. Third is, I'm not giving the atomic number. You will not get the atomic number. You have to remember, okay, calcium is in which group? You can use the notebook right now. Right? You can use the notebook right now. But at the end, you will not have the notebook. Okay. Oxygen. 5 molecule of boron. 6 molecule of aluminium. 7 molecule of chlorine. 8 molecule of gallium. 9 molecule of silicon. 10th molecule of potassium. 11th molecule of carbon. 12th molecule of nickel. You have to determine the valence electron for all of them. Valence electron के सबसे पहले ग्रुप नंबर हमको बताते जाइए. You can look at the notebook. ठीक है? You just need to tell me right now. यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है. यहाँ पे हम लोग ग्रुप नंबर लिखेंगे. Don't need to write. ठीक है? कुछ मत लिखिए, please. Okay? Here we'll write the valence electron. Okay? Please leave your pen aside and search ना. Calcium is in which group? Calcium कौन से ग्रुप में है? Turn your mic on, Justine, Sabiha, Shaima, and Zainab. Please turn your mic on. This is the learning. Okay? This is the learning. Please don't write. ना. Try to answer. Sabiha and Shaima, keep your pen aside. आप नोट्स अपने जो भी हमने लिखा है ना, ट्रिक टू रिमेंबर, उसी में होगा कैल्शियम कहीं ना कहीं. इफ यू हैव रिटन. सबिहा, आपका माइक ऑन नहीं है. सबिहा, कैन यू प्लीज हैव योर माइक ऑन? इतना बोलने पे भी यार तो कर ही देना चाहिए माइक ऑन ना. क्या हो गया सबिहा? सबिहा, व्हाट हैपेंड यार? सबिहा, एम आई ऑडिबल? सबिहा, हेलो. सबिहा ही नहीं गया क्लास में. चलिए ठीक है. कैल्शियम के लिए बताइए गाइस, व्हाट इज द ग्रुप नंबर फॉर कैल्शियम? 2. सबको दिख रहा है 2? तो व्हाट इज द, कीप योर माइक ऑन, कीप योर माइक ऑन ना. शाइमा, माइक ऑफ मत कीजिए. ठीक है. 2, तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2? यूनिट डिजिट वंस डिजिट. वंस, टेंस, हंड्रेड्स पढ़ते थे ना. तो वंस डिजिट में क्या है यहाँ पे? 2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी 2. Sabiha is not. Hi Meena, you're in a down. Internet is not well. Okay Sabiha, enjoy I guess. ठीक है. तो Sabiha, you can now. This for everyone. If you're not able to understand properly what I'm trying to say, if the internet connection is not very good, leave the class. ठीक है. Try to look at the recording first. क्या फायदा आपकी like 1.5 hour यहाँ पे भी बर्बाद करके. You are just getting the, you are just getting the false belief that you are learning right now, है ना. तो जब इंटरनेट वगैरह खराब हो आप लोग का, बहुत खराब है. This is that you are not able to understand. Only at that point you leave the class, and but please remember that you have to watch the recording. ठीक है? ठीक है, fine sir, not a problem. Okay. For fluorine बताएंगे guys. Fluorine के लिए क्या है ग्रुप नंबर? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी देखते कौन बताता पहले. Fluorine के लिए, fluorine. Group number for fluorine. 17. Very good, 17. What is the ones digit for this? 7. 7. Very good. ठीक है. So that is the valence electron for fluorine. Okay. Phosphorus के लिए बताइए, what is the group number for phosphorus? 14. Phosphorus group number. How much? 14. 15. 15 Zainab. देखिए जरा. But I wrote 14. 14. 2 बार 14 लिख दिया आपने. Yeah. हाँ ठीक है, लीजिए 15. The valence electron will be, हमने ही गलत लिखा है क्या? हमने सही लिखा भाई. नहीं, it may be ना कि मतलब हम, like I may also make some mistake ना sometimes. चलिए ठीक, not a problem. ठीक. The valence electron 4, 5. 5 रे भाई जरा 4 स्टक हो गया बिल्कुल आपके दिमाग में. ऑक्सीजन के लिए
What is the group number for oxygen? Shaima, आपका तो mic off हो गया, Shaima. Oxygen group number. 16. 16. Very good. 16. Valence electron. 6. 6. Boron. Boron. 13. 13. Valence electron. 3. 3. 3. Aluminium. Aluminium. 13. 13 once again, no? 13, right? And 3. Bagan, alu. Chlorine. 17. 17. Valence electron. 7. 7. 7. चलिए बाकी तो कर लेंगे वापस, है ना? ठीक है? We'll complete this whole thing and send me a photo once you're done so that I will check it, no? Just lean looking at your answer. You have to look from gallium, I guess, right? Gallium, correct. Silicon, correct. Potassium, correct. Carbon, correct. Nitrogen, correct. Very good. थोड़ा स्पेस बचा के रखिएगा. Don't exhaust all the space in the page because we have tried one more thing. इसके बाद हमको वैलेंसी समझना है, ठीक है? We want to understand valency after this. I'm sorry for coming before. ठीक है, but we need to have one more. ठीक है, yes, both of you guys have some space, ना? Valence electron और proton. ठीक है, fine. अब तो from gallium correct, silicon correct, potassium correct, carbon correct, nitrogen correct. Just सही है. Correct, very good. Waiting for Shaima. I guess Sabina नहीं, वो Shaima Sabina is outside. Shaima just waiting for you. ठीक है, आपका भी स्पेस बचा हुआ है. वेरी गुड. नाइट्रोजन करेक्ट, कार्बन करेक्ट, पोटेशियम करेक्ट, सिलिकॉन करेक्ट, गैलियम करेक्ट. वेरी गुड. ठीक है, सही है. We have here gallium that is going to be 13 and 3. Silicon will be 14 and 4.
potassium will be 1 and 1, carbon will be 14 and 4, nitrogen will be 15 and 5. ठीक है, अब जो अगला कंसेप्ट ना, दैट इज वैलेंसी. तो वैलेंसी इज आल्सो गोइंग टू बी नंबर. आपको बस दो नंबर ऐसे याद रखना, 0 और 8. 0 और 8. व्हाट डिड आई से? 0 और जस्टिन, सबिहा, शाइमा, ज़ैनब, कैन यू माइक ऑन? 0 और 0 and what? Keep your mic on. Keep your mic on. Abhi you have to talk now. 0 and what? You have to remember 0 and 8. 0 and बोलो. 0 and loudly. 1. 8. 1 नहीं, 8 है भाई. 8 एक नहीं, 8. 0 और 8. ठीक है. 8. You have to remember these two numbers. 0, 8. ठीक है. 0. चलिए, I will ask you guys questions. You will keep answering. 2 is closer to 0 or 8. 2 is closer to 0 or 8. 0. 0. 0. Zero. How close it is? कितना वैल्यू है? 0 2 में कितना डिस्टेंस है? 2. 2. 2. Correct. 2. 7 is closer to 0 or 8. 8. 8. 8. And what is the distance between them? 7 और 8 में कितना डिस्टेंस है? 1. 1. 1. 5 is closer to 0 or 8. 8. 8. And what is the distance between them? 5 and 8 में? 3. 3. 3. And 6, it is closer to 0 or 8. 8. 8. 8. And what is the distance between them? 2. 2. 2. ठीक है. अब बताइए बोरॉन के लिए क्या हो जाएगा वैलेंसी? आई होप यू गॉट द जिस्ट ना. जस्टीन, सबिहा, ज़ैनब, क्या Yes, कर रहे हैं, समझ में आया? हाँ, ठीक है. बोरॉन के लिए बताइए, व्हाट विल बी द वैलेंसी फॉर बोरॉन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 और 8, देन द डिस्टेंस 3. 3 ना. 3 सही है. Yes, sir. फॉर एल्यूमिनियम इट विल बी अगेन, फॉर एल्यूमिनियम 3. 3. फॉर क्लोरीन 1. 1. फॉर गैलियम 3. 3. फॉर सिलिकॉन 4. 4 ओनली ना, मतलब इट इज नियर टू बोथ ऑफ देम, लाइक सेम डिस्टेंस दोनों तरफ 4 ही होगा. एंड पोटेशियम 1. 1. एंड फॉर कार्बन 4. 4. एंड नाइट्रोजन 3. 3. मेक सेंस फॉर एवरीवन? यस और नो, प्लीज टेल मी. सही है. Yes, sir. अब एक बार आप खुद से कर लीजिएगा इसको बैलेंसी. आई होप यू हैव नॉट, यू आर नॉट राइटिंग. सेंड द आंसर फॉर बैलेंसी फॉर ऑल ऑफ दीस, है ना. ठीक है. जस्टीन, साइना, शाइमा एंड ज़ैनब, Yes, sir. ऑल ऑफ यू गाइस, यू हैव स्पेस ना उसी पेज में, आराम से कर लो. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ज़ैनब, हाँ, सेंड इट ऑन व्हाट्सएप. Yes. वन थ्री टू 1 3 4 ठीक, सही.
Just give me a minute. I will give you. Just give me. Guys, I'm back. ठीक है, ये वैलेंसी जो है ना, वैलेंसी आपकी राइट इट डाउन। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 3 2 3 3 1 3 4 1 4 3। ठीक है, वैलेंसी टेल्स अबाउट, वैलेंसी किस चीज के बारे में आपको बताएगा? वैलेंसी इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट दी बॉन्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, टेल्स अबाउट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब इसी तरह से ना, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट, if I want you to write the formula for magnesium chloride, ठीक है, let me give you a question like this, write the formula for following. Magnesium chloride, ठीक है, तो मैग्नीशियम के लिए यू राइट Mg, क्लोराइड के लिए यू राइट CO। ठीक है, व्हाट्स द वैलेंसी फॉर मैग्नीशियम? वैलेंसी दैट इज 2। for chloride, for chloride the valency will be 1 because valence electron 7 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, and then you do like this, so the formula will become Mg1Cl2। You guys remember something, doing something like this in the lower classes? Yes, sir. जसलीन, साइमा, यस, ठीक है, तो ये यहाँ से आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, सो 1 ए लिख देते हैं, बी कुछ आप लोग कर लीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड, लेट सपोज ये पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, सी आप लोग कर लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डी आप लोग कर लीजिए पोटेशियम ब्रोमाइड कर लीजिए, एंड इन ई यू विल राइट कैल्शियम नाइट्राइड।
Send the answers on my WhatsApp. Okay, the first two are correct. Just read. पोटेशियम ब्रोमाइड सही नहीं है. पोटेशियम ब्रोमाइड फिर से देखिए. ब्रोमाइड, ब्रोमीन इज इन द ग्रुप नंबर 17 ना. कैल्शियम नाइट्राइड सही है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो करेक्ट. गाइस देखिए, पोटेशियम ऑक्साइड के लिए करना पड़ेगा लगता है हमको. नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइड. नाइट्राइड एन. ऑक्साइड K2O. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. शाइमा नाइट्राइड वाले में आप लोग कैल्शियम वाले में. ठीक है, जैसे ही सो ठीक है. तो बाकी तो ठीक है. तो पोटेशियम ऑक्साइड A and O. Valency is 1, valency is 2. So it will be K2O. Then we have aluminium oxide. Aluminium oxide. Aluminium is 3, oxygen is 2. So aluminium oxide. It will be Al2O3. Then we have potassium bromide. Potassium is K, bromine is Br. Bromide, है ना? तो bromide के लिए Br 1 and 1. So it will be KBr. Then we have calcium nitride. Calcium nitrogen के लिए N. This is 2, this is 3. It will be C3 and 2. Achha, if I have something like this, aluminium nitride,
तो फिर क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन का N3 and 3, so both of these three है, तो ये रेशियो होता है एक्चुअली, दिस रेशियो विल गेट कैंसिल एंड 1:1 हो जाता है, है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सिमिलर इज द केस फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, magnesium oxide, Mg and O, 2:2. So 2 and 2 will get cancelled, 1:1. It will be MgO. Copy these two down. And जिन लोगों ने कैल्शियम नाइट्राइड नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और फिर ना आगे बढ़े, जस्टिन साइमंस है ना। Yes, sir. Next, we are going to learn a bit more about the modern periodic table, जिसमें हम लोग S block elements के बारे में जनरली कुछ चीजें बात करेंगे। Similarly for the P block, D block and F। ठीक है, so you will write S block elements, S block elements। ठीक है, so S block element में ना, it is composed of two groups। It is composed of two groups। As S block जो है ना आपके पास, it can hold, sorry, S subshell can hold only 2 electrons maximum। तो S block में कितने होंगे, two groups। As each S subshell can have maximum of 2 electrons। ठीक है, तो 1s में भी दो, ठीक है, तो इसकी वजह से 1s1 you will have one group, 1s2 में you will have the other group। नंबर 1, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जो है इसको बोला जाता है एल्केली मेटल्स। एल्केली metals। Why they are known as alkali metals? Because they increase the concentration of OH negative ions in in water। aqueous medium में क्या करेंगे, if you add this in water, तो ये क्या करेंगे, they will increase the concentration of OH negative। मेटल का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनको हम मेटल कहेंगे। ठीक है, एल्कली का मतलब क्या हो गया, द मीनिंग ऑफ एल्कली इज दे increase concentration of OH negative ions in water।
ठीक है, और मेटल्स का मतलब क्या हो गया? मेटल्स का मतलब हुआ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, क्या है ग्रुप वन में हमारे पास? ग्रुप वन में हमारे पास सबसे पहले है हाइड्रोजन। इवन दो ग्रुप वन में हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सब एस ब्लॉक एलिमेंट भी ट्रीट किया जा सकता है, इट कैन बी आल्सो ट्रीटेड इन द ग्रुप 70, लेकिन फिर भी लेके चलेंगे हम। सो यू हैव हाइड्रोजन, देन यू हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिनर, रब, क्रस। ठीक है, if you look, then I can write the period for all of these things. The period for the hydrogen will be first period, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. And atomic number for these will be 1, 3, उसके बाद 8 ऐड करेंगे तो 11, 11 के बाद once again 8 ऐड करेंगे तो 19, then you will have 37, then you will have 55, and then you will have 87. These are the atomic number for all of them. If I want to write the electronic configuration, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1s1. So will be 1s2 and 2s1, 3 electrons. उसके बाद we can use neon, 10 electrons, and then 3s1, है ना, और 3s1. Then you will have neon के बाद you will have argon, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s1. ठीक है, so as you can see that the outermost shell में आपके पास whatever the period number, that is 1 to 1s, second period the 2s1 है, third period तो 3s1, fourth period तो 4s1. That means, and what is the period number? Period number is actually the maximum value of principal quantum number. So in general, what we can write, the general electronic configuration for the group 1 will be ns1. n क्या है यहाँ पे? n is the period number. And we can also write the valence electron for all of these are going to be 1, and the valency for all of these is also going to be 1. Does this make sense? Yes or no, please tell me, guys. ये आप कंप्लीट करेंगे घर पे, ठीक है? फॉर द 3 रुबीडियम, सीजियम बहुत आसान है। आर्गन के बाद कौन आता है? नियाजर, एक करो, क्रिप्टन, 5s1, है ना? ठीक है, सिर से लिख लीजिएगा। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। शाइमा, ज़ैनब, सबिहा, ऑल ऑफ यू गाइस। Yes, sir. Yes, sir. सबिहा चली गई, अच्छा लिख लिया आपने? और आर यू गाइस राइटिंग? Sir, I'm लिख रहे तो लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत। हाँ, लिख लीजिए आराम से, लिख। हाँ ज़ैनब, कैन यू प्लीज टेल मी माइक ऑन ज़ैनब? ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, it has come from the individual electronic configuration. We saw the individual electronic configuration and then we generalized it. पहली बात तो ये मेक सेंस है ना? Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इंडिविजुअल को देख। इट्स नॉट लाइक general electronic configuration, we knew about general electronic configuration and then the electronic configuration of individual elements were taken. It is not the case, it's just opposite. We had the individual and then we generalized. So when we look at hydrogen, it is 1s1. If I look at the outermost electronic configuration, because outermost electronic configuration is the one that is going to help you in valence electron and then in valency and then in the combining capacity, and then it is going to form the molecules. So the inner shell electrons, they are not very useful in chemistry. Outermost electrons are useful because they are going to determine the valence electron, they are going to determine the valency,
and then they are going to determine the combining capacity, which is going to determine the molecules that they are going to make, and the molecules then they are going to determine the reaction that they are going. Make sense, Zainab? That why we are focusing on the outermost electrons. Yes, sir. ठीक है तो outermost electrons वही general electronic configuration will be right now, so we are talking about the outermost electronic configuration, general outermost electronic configurations. I think that was the only doubt you had, because how 1s2 2s1 is becoming ns1, right? ऐसे ही कुछ था. Yes, sir. Now it is clear. Yes, sir. If you look at the outermost, then outermost में s1 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 सब जगह है. What is changing with each period? First period में 1s1 है, second period में 2s1 है, 3s1 है. ठीक है सर ना? Yes, sir. Got it. Next we will write for group number 2. ठीक है. अच्छा यहाँ भी इसको ना ग्रुप नंबर 1, अच्छा ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 2 को क्या बोला जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. On this alkaline earth metals. Alkaline का मतलब वही है, increases the concentration of OH negative in water. Metals का मतलब वही है. What's the meaning of earth? Earth का मतलब है, see this magnesium, calcium, etc., which are present in the group 2 are found in earth's crust. Are found in earth's crust. That is why alkaline earth metals. ठीक है. Now what are the elements here? आपके पास बेरिलियम आएगा पहले, है ना? If I look at the period also, the period में ये second period में बेरिलियम है ना, it's after the hydrogen, first में नहीं है बेरिलियम. Then we have magnesium B, मग का सर बड़ा 2, 3, 4, 5, 6 and 7. If I look at the if you want to write ना बेरिलियम magnesium लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है फिर तो ठीक है. The atomic number is 4 for magnesium. It is 12. Then it is 20. 20 के बाद आप 18 add करेंगे तो 38. Then again you will add 18, so you will get 56. Then you will add 32, so you will get 88. Okay. So for beryllium, the electronic configuration is going to be 1s2, 2s2. For magnesium, we will use neon, and this will be 3s2. Okay. After neon, we have Nias array, that is argon, and it will be 4s2. And so on. So you can see that the general outermost electronic configuration for this, it is going to be ns2, where n it is equal to the period number, and the valence electron in the whole period it is going to be 2. The valency it is going to be 2 once again. Write this down. Raise your hand once you're done. Yes.
Waiting for Shaima and Zainab. ठीक है, यहाँ पे ना we have a lot of atomic numbers and we have the group number also. ठीक है, period number भी आपके पास है. Is there any way that you can think of, है ना? I hope you have written all of these things in the notebook, है ना? Atomic number ये आपके पास है, this period number is there and group number तो 1 और 2 आपको पता ही है. Now, is there any way that you can determine the atomic number? Determine atomic number if group number and period number is given. Can you find any relationship? Look at the period number and group number. इससे अगर आप कुछ relationship पता चले तो बताइए. जैसे आपके पास मान लीजिए ग्रुप नंबर आपको दिया हुआ है 3, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर मान लीजिए 2 दिया हुआ है, ठीक है, एंड द पीरियड इज गिवन अस 4. So can you determine the atomic number? You need to use the noble gas atomic numbers, by the way. Noble gas अगर आपको याद है ना, then आप कुछ कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा बता रहे हैं. ट्राई टू आंसर मी इफ यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है ना, कीप योर माइक ऑन अगर आप समझ पा रहे हैं. ठीक है, प्लीज सी थिंग्स. आवर एलिमेंट इट इज इन पीरियड नंबर 4. पहले हम ये देखते थे, इट इज इन द पीरियड नंबर 4. तो ये पहले लाइन में नहीं होगा, सेकंड लाइन में नहीं होगा, थर्ड लाइन में नहीं होगा, फोर्थ लाइन के बाद आएगा, थर्ड लाइन के बाद आएगा. करेक्ट है सभी? जैसे टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ऑन माय फोन. दिस इज द पीरियड ना, 1 2 Yes, sir. 3 उसके बाद आएगा. ठीक है, उसके बाद नाउ व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड? दैट इज द थर्ड नोबल गैस, आर्गन. करेक्ट है? ये बात समझ में आ रही है आपको ना? फर्स्ट पीरियड में आपके पास लास्ट एलिमेंट इज हीलियम, सेकंड में यू हैव नियॉन लास्ट, थर्ड में यू हैव आर्गन. करेक्ट है गाइस? जैसे जस्टीन शाइमा ज़ैनब, मेक सेंस Yes, यहां sir. तक? ठीक है, आर्गन. आर्गन के बाद यू हैव टू गो मूव हाउ मेनी प्लेसेस? आर्गन के बाद ये तो 18 हो गया. आर्गन के बाद नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी ग्रुप नंबर 1. उसके बाद जो है ग्रुप नंबर 2 आएगा. आर्गन के बाद यू विल हैव टू मूव 2 प्लेसेस. तो आर्गन तक यू हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 19 यहाँ पे हो जाएगा और 20 वाला एलिमेंट यहाँ पे होगा, है ना? ग्रुप नंबर 2 है, पीरियड 4 है, वी आर इन द पीरियड नंबर 4 एंड दिस इज द, तो एटॉमिक नंबर 20. मेक सेंस? देखिए जरा, 4 ग्रुप 2 20. समझ में आ रही है? Did you guys get this? Tell me, Can you guys. explain again? See, we have to go to the fourth group, right? तो थर्ड ग्रुप तक तो आर्गन है. लाइक नेक्स्ट नाउ फोर्थ ग्रुप में व्हाट इज द पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट्स? एक फोर्थ ग्रुप में, नॉट ग्रुप, माय बैड.
fourth period. In the fourth period, are you the first element of the fourth period, second element, third element, fourth element, fifth element? कैसे पता चलेगा? That will be known by the group number. If you are in the group number 1, then you are the first element of the fourth period. If the group number is 2, you are the second element of the fourth period. Wait, बात समझ में आ रही है? Can you get this? Yes or no? Yes, sir. Okay, so now we are at least the element will have 18 atomic number because argon, because it is in the fourth. So third तक तो argon ही है. So you will have, if you want to move on the fourth, now how many places you have to move? After 18 you will move 1 to 19, group 2 to 20. Group 3 होता है तो फिर 21 हो जाता in the fourth period itself. बात समझ में आ रही है थोड़ा सा? Yes, sir. ठीक है? So basically what you need to do? Yes, sir. Basically you need to atomic number of n minus 1 noble gas. ठीक है, what is n? N is the period number, ठीक है ना? Plus whatever the group number is. In this case, the period number was 4. So atomic number of n minus 1, that is the third noble gas. Atomic number of third noble gas plus 2. Third noble gas क्या है हमारे पास? Argon. Argon का atomic number 18 plus 2. That will be equal to 20. That is the atomic number. ठीक है, and it is equal to period number. Write this down. Raise your hand once you're done. Anyone still writing?